हेलो। तो yesterday we had discussed what is national income. कल हमने नेशनल इनकम की डिस्कशन की थी. आज हम उसी नेशनल इनकम के डिस्कशन को थोड़ा सा और फर्दर लेके जाएंगे और हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे व्हाट इज प्राइवेट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम एक्सेट्रा. अगेन एग्जाम के लिए आपको ये सब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पर एक दो एमसीक्यूज आते ही आते हैं. सो लेट अस ट्राई एंड थिंक अबाउट व्हाट इज प्राइवेट इनकम. ठीक है, प्राइवेट इनकम के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, नेशनल इनकम. राइट, प्लस सो जस्ट थिंक अबाउट दिस. इमेजिन करो कि आपको ऑलरेडी जीडीपी दिया हुआ है, उसी से ही एनएनपी ऑलरेडी दिया हुआ है, नेशनल इनकम आपको ऑलरेडी गिवन है. नेशनल मतलब कि इट हैज टू बी एनएनपी, राइट? सो द नेशनल इनकम इज ऑलरेडी गिवन टू यू. उस नेशनल इनकम के बेसिस पे ही हमको आगे जाना है. सो इट इज नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस interest on public debt minus social security, right? Or the profits of public undertaking. तो जब हम नेशनल इनकम में जो भी बाहर से इनकम आई हुई, जैसे आई एम अ पेरेंट, माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग आउटसाइड, उन्होंने कोई इनकम मुझे दी है, दे हैव गिवन मी सम मनी, दे हैव ट्रांसफर्ड मी दैट मनी, दैट इज पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम. वो बेशक ही नेशनल का पार्ट ना हो, इट मे बी द केस कि वो नेशन का पार्ट नहीं है इनकम का, बट वो मेरी प्राइवेट इनकम में तो आएगा ना. सो द ट्रांसफर पेमेंट, या अगर गवर्नमेंट को मैंने कभी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे थे और उन बॉन्ड्स पे मुझे गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, तो वो भी तो मेरी प्राइवेट इनकम का पार्ट है, राइट? सो प्राइवेट इनकम विल इंक्लूड ऑल ऑफ दिस. ओके, अच्छा, मेनी पीपल आस्क, इज प्राइवेट इनकम एंड personal income the same? No, they are different. So let's write down the formula of personal income. Personal income is national income. पूरा का पूरा सेम रहेगा. अच्छा, इजी वे दिखा देते हैं. पर्सनल इनकम इज प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस प्रॉफिट टैक्स. बेटा, जो भी आप इनकम अर्न करोगे, ठीक है, उस इनकम पर आपको टैक्स देना इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू पे द टैक्स. आफ्टर पेइंग द टैक्स जो नेट इनकम बचती है वो पर्सनल इनकम होती है. So personal income is actually private income minus undistributed corporate profits minus the profit taxes. Is this clear? अच्छा, तो फिर मैम what is disposable income? Disposable income is personal income माइनस डायरेक्ट टैक्सेस. अगर जो मैं इनकम टैक्स पे कर रही हूँ वो टैक्स भी मैं हटा दूं तो उसके बाद जो इनकम बचती है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम. दिस डिस्पोजेबल इनकम जो अल्टीमेटली मेरे हाथ में आई है, द नेट इनकम दैट आई हैव, द डिस्पोजेबल इनकम, दिस डिस्पोजेबल इनकम it can either be consumed or saved. So the disposable income can either be consumed or saved. Clear हो गया बेटा? कोई डाउट है इसमें? ठीक है जी. अब एक अलग कॉन्सेप्ट आता है जो एग्जाम में आता है, होता है रियल इनकम का. बहुत ऑफन एग्जाम में रियल इनकम पे एक क्वेश्चन आता ही आता है. रियल इनकम मतलब मैं अपनी इनकम से क्या खरीद पा रही हूँ. हाउ मच कैन आई परचेज फ्रॉम माई इनकम is called real income. Is this clear? So the quantity that I can purchase
right, is my real income. Just for example, I have earned 1,000 rupees and 1 kg of wheat costs me 4 rupees, 4 per kg. So how many wheat can I buy, beta? I can buy 1,000 divided by 4, which would be 250 kgs of wheat. This is my real income. So real income is in a way telling me my purchasing power. It tells me how much can I purchase. किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो आप हो या मैं हूं, any individual's aim is to keep this real income constant. मेरे को मतलब नहीं है कि मैं 10,000 कमा रही हूं या 20,000. I am not concerned whether I am earning 10,000 or 20,000. My concern is, can I purchase the same 250 kgs of rice or not? Can I have the same purchasing power or not? So the purchasing power is called real income. Okay. Okay. Next question. Next point आता है इसमें per capita income. So per capita income is very simple. National income divided by the population. This is called per capita income. इसी तरीके से एक आ जाता है यहाँ पर जिसे बोलते हैं रियल पर कैपिटा इनकम. ये होती है रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. So real per capita income is real income by population, and per capita income is national income by population. I hope this is making sense to you. Okay. अब बेटा नेक्स्ट चीज जो आती है इसमें वो आती है मेथड्स ऑफ measuring national income. Methods of measuring national income. In this we have 3 methods: product method, income method, and expenditure method. Many people can call product method as value added method also. बहुत books इसको अलग भी लिखती हैं, but we will call it the same. एक ही बात है. You are adding the value at each level, so it is called the value added method. And then you have income method, and then you have the expenditure method. ठीक है? अच्छा, sometimes in exam they may ask you what are the थोड़ा सा theoretical है, but it may come in MCQ. What are the difficulties in measuring national income? National income को measure करने में क्या difficulties आती हैं? This may come some here or there करके in the MCQ. Beta first, non-monetized sector. जो सेक्टर मोनेटाइज नहीं हुआ, जैसे हाउसवाइफ्स का वर्क, उनको मेजर करना मुश्किल होता है. सो दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम. ठीक है. सेकंड, ब्लैक मार्केट. जो मार्केट दिखती ही नहीं है, द मार्केट आई कैन नॉट सी, द अंडरग्राउंड मार्केट, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर. थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. We want to make sure that a good which is measured once should not be measured again. जैसे अगर कॉटन से क्लोथ बना है और क्लोथ की वैल्यू नेशनल इनकम में एडेड है, तो कॉटन की ऐड करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. फोर्थ, ट्रांसफर पेमेंट्स. We don't want to include the transfer payment. If your son is paying you money, अगर तुम्हारे बेटे ने तुम्हें ट्रांसफर किया है पैसा from abroad, that should not be added in income, right? In this national income. So transfer income, that's important. Then fifth, old goods. The good which is not produced in the same year should not be added in national income. ठीक है. Sixth, the question of calculation of depreciation.
बेटा अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के हो, फॉर एग्जाम्पल frankly speaking, even I just had my accountancy in class 11th and 12th, so I don't remember this correctly, not the complete accounts that I can tell you, but there are various methods to go ahead and calculate depreciation. ठीक है, depreciation को calculate करने के बहुत सारे methods होते हैं. For example, I remember we used to learn something which is known as discounted cash flow method, annuity method, straight line depreciation method. If you go to a CA, they will tell you various other methods like, right, so diminishing balance method, right, sinking fund method. तो depreciation बहुत तरीके से calculate हो सकती है. तो हम लोग, for the purpose of an economist, we simply say gross minus depreciation is net. But how will this depreciation be calculated? This is also one of the problems of national income. ठीक है, so all these things are the problems of national income that must be thought of. अच्छा, इसके बेसिस पे अब, क्योंकि हमने आज ये पूरा नेशनल इनकम का एक तरीके से बेसिक्स पढ़ लिए हैं, we have understood what national income is. One thing else that I want to go ahead and talk about is called social accounting. सोशल अकाउंटिंग टर्म, देखो इकोनॉमिस्ट्स के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट. सो सोशल अकाउंटिंग इज बेसिकली given by, it was given by J.R. Hicks, and this was given in 1942. It was given by J.R. Hicks in 1942, and in his words he said, social accounting means nothing else but accounting of whole community or nation. अगर मैं पूरी कम्युनिटी को एक साथ ले लूं, इफ आई टेक कम्युनिटी एज अ होल, तो मेरी कम्युनिटी कैसे दिखेगी? जैसे he mentioned that we can divide it in many parts, like production account, production of the entire community, consumption account, government account, वो ये CIG है, ठीक है, capital account जिसको हम इन्वेस्टमेंट बना देते हैं, foreign account. So social community basically it describes the economic activities of different sectors of the entire economy. But bus, because it's a different way of stating GDP, you should remember this term, and the person who gave this term, you should also remember that. ठीक है जी. अच्छा, फिर एक चीज और है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग. बेटा ये सारे टर्म्स और किसने क्या प्रोपोगेट किया, ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके, सो दिस इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग, this was basically first developed by W.W. Leontief. Leontief method सुना होगा ना मैथ्स में. So this was given by W.W. Leontief, and this basically, this input output method, this basically tells us that there are some interrelationships between different industries. अलग अलग इंडस्ट्रीज के बीच में कुछ इंटर रिलेशनशिप होते हैं, इंटरडिपेंडेंसीज होती हैं. जैसे इंडस्ट्री ए बी पे डिपेंडेंट है, बी सी पर डिपेंडेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इंटर रिलेशनशिप इज डिफाइंड थ्रू दिस इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग, एंड इट वाज गिवन बाय लियोंटिफ. ठीक है. फाइनली what else you should know from this part is flow of funds account. बेटा हमने मेन तो सब पढ़ लिया है, बट थोड़े इकोनॉमिस्ट्स के नाम और अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके के जो भी चीजें डिराइव हुई हैं, किसने क्या डिराइव किया, ये मैं आपको इस वन शॉट में बताना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन रिमेंबर दोज थिंग्स ऑल्सो. एवरीबडी नोज व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो भी रिवाइज कर लेंगे, बट किसने क्या दिया ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैच द फॉलोइंग के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये हमारे को लिखना कहीं पे जरूरी है एंड रिवाइज करना भी जरूरी. ठीक है बेटा. सो ये जो आपका फ्लो ऑफ फंड अकाउंट है, इसमें हम बात करेंगे प्रोफेसर
मॉरिस कॉपलैंड, जिन्होंने 1952 में नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको हटाने के लिए एक फ्लो ऑफ फंड्स अकाउंट्स बनाया। फ्लो ऑफ फंड्स अकाउंट बेसिकली किसी भी इकोनॉमी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। Flow of fund account basically are the financial transactions of any economy, and these transactions basically it give us a link between the savings and investment. So basically you're preparing an account, जैसे accounts में होता है, you prepare a पूरा statement, you prepare financial transaction which tells you where the money is going, where the money is coming from, etc., etc. And this was given first time in 1952 by Professor Maurice Copland. You have to remember all these names. Okay. So now on the basis of these 2 days, I am going to go ahead and give you about 114, 130 questions based on macroeconomics. And all of you are supposed to go ahead and do those questions. वो questions करने बहुत ही important है. That will help you understand the kind of questions that will come in the exam. Okay, all right. Thank you.